Okay, so let's start with the next topic of permutation. Next is a circular permutation. So here we have two basic formulas. I will give the example first. For example, like we have A, B, C, D, four person, like A, B, C, D, four person, and you want to sit in the round table. They are different. Before before moving to the next, if you are a four person, you want to stand in a row. Okay, आप उसको एक रो में खड़ा करना चाहते हो, तो how many times you can arrange them, so that will be how many. If we have a four person means 4p, or at a time 4 रखना, that will be the 4 factorial. This will be the answer that you know already. But if you want to sit in the round table, okay, so A, B, C, D. So here clockwise or anti-clockwise different. When you will move from A, B, C, D, and A, D, C, B are different. So you can calculate very easily. I will give this more small example, because when I will explain, instead of 4 you can take 3 person. If you will stand in a row, then you have a 3 factorial answer. But if you want to sit in the means round table A, B, C, so you can calculate very easily. आपका एक तो कॉम्बिनेशन रहेगा A, B and C, ठीक है. दूसरा क्या रहेगा आपके पास A, C, B. ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट हो गया, करेक्ट. तो हमारे पास A, C, B. ओके, तो ये हमारे पास बन जाता है. दो ऑप्शन है, इसके अलावा और बताइए कोई भी नहीं होगा. अगर आप इसको राउंड टेबल में बिठाओगे, ज़्यादा ये हो सकता है ना, ए सी बी इधर ले जाओ, तब भी तो ए सी बी आएगा. तो यही अरेंजमेंट आपको मिलेंगी. ओके, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द ए. सो इसके लिए फार्मूला बन जाता है, इफ़ यू हैव एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, you have a different object and different objects, and you want to sit in a circular, means in a round table, or you can may have some other, you have a neck, you want to make a means necklace, and you have a all different kind of beads, all different, not same. Then the formula will become n minus 1 factorial. This will be the formula when you have a circular permutation and all are different. Means here anti-clockwise and clockwise are different. So very easily you can find, you have a 3, how many numbers? 3 numbers. So 3 minus 1, that is the 2 factorial, and 2 factorial is 2. You have already calculated how many are there, 2 factorial. So you must memorize this formula for the circular permutation. Another situation is the when clockwise and anti-clockwise are not different, means clockwise and anti-clockwise are not different. So then circular permutation will be is equal to n by 2 minus 1 by 2. Correct? This will be the formula. It's very simple. You have a beats, means मुझे बताइए आप ऐसे beats बनाना चाहते हो A, B, C. अब आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट नहीं माना, तो आप A के बाद B आना है, C आना है, जैसे मर्जी बना लो. नेक बनाओगे गा, तो फिर तो उसको आप अलग नहीं मान रहे, तब तो आपको ये एक ही माना जाएगा. देयर विल बी ओनली वन ऑप्शन. उसको आप ए बी सी से लिख लो, सी बी ए लिख लो, ऐसा रहेगा. अगर आप सी इधर ले जाते हो, तब भी तो ए के बाद इधर सी आता है. तो ये चीज़ अलग नहीं मानी जाती. स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कोई नहीं होता उसका, जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट नहीं मानते. सो देन यू विल मेमोराइज द फार्मूला दिस. सो इसमें क्वेश्चन जो नॉर्मली आता है,
So what kind of question will be there in how many, like there is a question in how many ways you can 6 beads of different color, 6 beads हैं different color की, you form a necklace. So आपका result बनेगा 6 minus 1 factorial by 2. ओके तो इसमें कोई जब आप नेकलेस बनाते हो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी देखते हो आप. ओके बट आप जैसे कोई पर्सन को आप टेबल राउंड टेबल के बना रहे हो तो तब आप थोड़ा देखते हो, है ना, कि इधर से जाना है या उधर से जाना है. सो यू मस्ट मेमोराइज दिस वन. तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे सर्कुलर परमुटेशन में आते हैं. ये दो फार्मूले मैंने बताए, एक n-1 फैक्टोरियल व्हेन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिफरेंट, n-1 बाय n-1 फैक्टोरियल बाय 2 व्हेन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर सेम. So let's start with the combination. So combination that I told you, it is a basically groups. Normally selection के जो question आते हैं, that is basically of combination. When you have to select like team from team select करना है, अपने student select करने out of some group. So this kind of a question will comes in the combination. Okay. सो कम्बिनेशन का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है NCR. N is the total number of objects, you know that N is the total number of objects, or R is the objects taken at a time. So formula will become N factorial n minus r factorial into r factorial. So this will become the formula of combination, and you know that it is basically the number of groups you can find. अब सिलेक्शन के क्वेश्चन इसमें रहेंगे. अब कुछ आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए कि हम कम्बिनेशन का वैल्यू और कैसे निकाल सकते हैं. एक दो फार्मूला भी हमें मेमोराइज करना है कि जो n+1 NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल होता है n+1 CR. ये एक फार्मूला याद रखना, समटाइम यू नीड टू यूज समवेयर. ओके, अनदर थिंग इज द, ये इंपॉर्टेंट है, NCR इज इक्वल टू NCN-R. करेक्ट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फार्मूला. तो ये याद रखो, जैसे NC0 की वैल्यू NCN के इक्वल होती है, NC1 की वैल्यू NCN-1 के इक्वल होती है by using this formula. Correct? So ये फार्मूला यूज करते हुए कुछ एक आधा हम पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, देन वी कैन गो फॉर द अदर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव काइंड क्वेश्चन. तो मैं एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन, like I'm taking one question from your exercise, like if CN10, you know that this is the representation of NCR is equal to CNR. Correct, this is N, this is R, is equal to CN12. Determine, पहला क्वेश्चन, determine N, and the next is hence CN5. Correct. So what you will do here, you have given NC10 is equal to NC12, this is equal, so n factorial n minus 10 factorial into 10 factorial, n factorial n minus 12 factorial n minus 12 factorial. So student, here n factorial cancel, so you have this will be moved to here, n minus 12 factorial क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n minus 10 factorial 10 factorial. Now what will be the next step? देखिए ये n minus 10 is the small, n minus 12 is the small, this is larger. So what you will do, n minus 12 as it is, 12 factorial is larger than 10 factorial, you can write 12 into 11 into 10 factorial. So you write n minus 10 factorial
you can write n minus 10 into n minus 11, one more subtraction is there, and n minus 12 factorial, 10 factorial, 10 factorial, 10 factorial cancel, n minus 10, n minus 12 cancel. So what you have left, n minus 10, n minus 11, 12 into 11, correct? This is the required equation. Now we have to solve it. N square minus 10 minus 11 minus 21 n plus, you can do at your end, and that is 110, correct? So this is 132. Okay, so what you will get here, n square minus 21n and 132 minus 110 minus 132, it is minus 22 is equal to 0. So n square minus 22n plus 1n, minus 22 you can factorize it, n square, n is common, n minus 22 plus 1 is common, n minus 22, you will get n minus 22, n plus 1 is equal to 0. So you can write here n is equal to 22, n is equal to minus 1. Minus 1 नहीं हो सकता, n cannot be negative, so number of object cannot be negative. So therefore n is equal to 22. Now what you want to find out? You want to find out the value of NC5. So NC5 means, now NC5, so you will write 22C5. So that will become, one more shortcut is there, otherwise आप लिखोगे ऐसे 22 minus 5 into 5 factorial. ओके, अब इसको ब्रेक करोगे 22 into 21 into 20 into 20, ये नीचे आ जाएगा आपके पास 22 minus 5 आ जाएगा जी 17, ठीक है जी। तो 18, 19, 18, 17 factorial, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 factorial. So you are writing 22 into 21 into 19. You know that this is the shortcut way. You can write it directly 5, 4, 3, 2, 1. ये आप सीधा भी इससे लिख सकते हो. You have 5 factorial 1, 2, 3, 4, 5 and 5 तक लेके जाना, 1, 1 reduce करते हुए इसको भी. So you can do here. So now I am going to solve. 20 cancel, 6, 3. So you have final answer will become 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो 462 आ जाता है, मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 3, so you will get 26334. This will be the answer. Let's see this question. Determine the number of 5 card combination out of deck of 52 cards if at least one of the 5 cards has to be king. पहले तो 52 कार्ड में से you have to select 5 card combination and in 5 card में कम से कम एक king होना चाहिए, at least, it may be more than that. So total number of cards, you know that total number of cards is equal to 52, and you know that how many kings are there? 4 kings. Okay, number of kings is equal to 4. So what we will do, अगर हम इसमें से किंग निकाल लेते हैं 52 में से, तो रिमेनिंग कार्ड्स एक्सेप्ट किंग्स, है ना, किंग को छोड़ के, दैट इज जहाँ अदर देन किंग इज 48, है ना, 52 minus 4 is, what you will do, 48 आ गया.
अब आपने यू हैव टू सिलेक्ट 5 कार्ड्स, तो हम सारे ऑप्शन लेंगे। पहले जो हमारे पास, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसमें से एक किंग होना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर तो आप 52 में से 5 कार्ड लेते हो, एट लीस्ट वन, अच्छा दो तरीके हैं इसके, देयर आर टू वेज। सो वन वे इज, नंबर वन वे इज कि आप टोटल नंबर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी, अगर आप 4 किंग में से एक किंग सेलेक्ट कर लेते हो, एट लीस्ट वन किंग मीन्स 1 किंग, 2 किंग, 3 किंग, 4 किंग, 5 किंग। एक तो यह कि 4 में से एक आपने किंग ले लिया। अब बाकी आप दूसरे कार्ड लीजिए, और वो है 48, टोटल लेने कार्ड 5, यू हैव सेलेक्टेड वन, दैट इज किंग, अदर यू कैन टेक 4 मोर, सो 1 + 5 टोटल कंप्लीट करना है, जब तक मल्टीप्लाई करते रहना है। और प्लस का मतलब और 4 में से 2 किंग ले लो, तो अब जो 48 में से आप, सॉरी 3 लोगे, क्योंकि यू हैव टू कंप्लीट 5 कार्ड्स। अनदर और 4C3 क्रॉस 4C 48C3 और 4C4 सॉरी 2 48C1। तो एट लीस्ट कम से कम एक किंग इसमें आ रहा है, एक या दो या तीन या चार, मीन्स यू हैव टू सॉल्व दिस वन, करेक्ट, दैट इज द वन वे। सेकंड वे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, आप पूरे कार्ड ले लो, 52 में से 5 आप कार्ड ले लो, जो मर्जी हो सकते हैं इसमें सारे, किंग भी एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता किंग, पर हमें एटलीस्ट 1 किंग चाहिए। फिर आप क्या कीजिए, 48 में से 5 ले लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि आप किंग निकाल दो, ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें किंग है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया स्टेप। तो हम ऑल कॉम्बिनेशन में से जिसमें किंग नहीं है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी एट लीस्ट 1 किंग, दिस वैल्यू and this value 110% is equal, and when you will solve it, you will get LU is equal to 886656. This will be same, you can verify it, okay. You need to apply any one of them, correct. So this is the question, how many words with or without meaning, each of 3 vowels and 2 vowels, you have to take only 3 vowels or 2 consonants, and you have to form the words, okay, out of this letter is this word. So first check how many vowels are there, okay. So vowels are I here, I, O, U, E, means this one, U, E, correct. You have to select only 3 out of 4, that is the one thing, means total are 4. Now consonants are N, V, L, T. So consonants are 4, 1, 2, 3, 4. 4 consonants, 4, these are the 4.
एंड दीज आर आल्सो 4। और आपको कितने सिलेक्ट करने, बिकॉज यू हैव टू सिलेक्ट इट, यू हैव टू टेक ओनली 3। सो 4 में से आपने, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड number of words will be is equal to, आप क्या करो 4 में से 3 vowels ले लो, सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। और 4 में से 2 आपने कंसोनेंट्स सेलेक्ट कर लिया, दिस इज द सिलेक्शन। टोटल हो गए आपके पास 5 लेटर्स। ये सिर्फ सिलेक्शन है। हाउ मेनी सिलेक्शन? फॉर ईच सिलेक्शन, जो भी आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने यू हैव सिलेक्टेड ओ यू एंड ई फ्रॉम हेयर, एंड फ्रॉम हेयर यू हैव सिलेक्टेड वी एंड एल, करेक्ट। जैसे आपके पास एक, आई एम टॉकिंग अबाउट वन सिलेक्शन, ठीक है, ओ यू ई, और यहाँ से आपने ले लिया वी और एल फॉर एग्जांपल। तो दे कैन अरेंज इटसेल्फ, आपस में ये परमुटेशन बनाएंगे। तो हर अरेंजमेंट के लिए ये जब 5 वर्ड्स होते हैं, 5 लेटर्स होते हैं, एट ए टाइम 5 ही रखने हैं, तो इनका परमुटेशन बनेगा 5 फैक्टोरियल। सो फॉर ईच सिलेक्शन 5 factorial arrangements will be there, so you have to multiply with 5 factorial, so this will be the answer, correct? So when you will solve it, 4 into 3 into 2 3 2 1, देखते हैं 4 3 2 1, 5 4 3 2, correct? So 3 2 1 3 2 1, so 2 2. So now you can solve it very easily. 4 into 3 12, 12 into 4 48, into 3 144, into 5 720, into 4. So you will get absolutely correct. This is the final answer. Student, this is the question. Another question, find the number of ways of selecting 9 balls. You have to select 9 balls. Okay. Or what you have red balls जो हैं, we have a 6, white balls 5, and blue ball you have 5. So you have to select whatever the selection you will take. You need to take each of the 3 balls, means 3 balls of each color, means आपको यहाँ से 3 लेना है, यहाँ से 3 लेना है, और यहाँ से 3 लेना है. So therefore required, they are not going to get the permutation, they are only looking forward how many selection. Required number of selections is equal to, अब 6 में से आप 3 ले लीजिए, 5 में से भी 3 ले लीजिए सिलेक्शन, और 5 में से भी 3 ले लीजिए. मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि ये एक सिलेक्शन है, 9 balls की सिलेक्शन है, बट each of color will 3 balls of each color, so that is the required answer. Okay, so you can calculate at your end very easily. That will be 6 5 4 3 2 1, लिखने की जरूरत नहीं है, 5 4 3 3 2 1, 5 4 3 3 2 1, 3 से 3 2 से 2, 3 3 2 2, 3 6, correct? So 5 into
4 20, 20 into 5 100, 100 into 2 200, 200 into 5 1000, 1000 into 2 2000. Exactly. This will be the answer. So student, next the two basic principles that we are going to discuss. It is basically, it comes in the elementary combinatories. So what is the meaning? We have two results, two principles. First principle is the sum principle, and second one is the product rule. Or you can say principle of sequential counting. So basically we have a sum rule and product rule. So what is the sum rule? If you have partition, you must know the partition first. Partition, what is the meaning of partition? If you have a A1, A2 and so on up to AN are the n sets and all are mutually disjoint. What is the meaning of that? Means, and another important thing, when you will take its union, their union, you are getting this whole complete sample space, and all, and also A1 AI intersection AJ is always 5, means no element is common between any of the pair of any two sets, correct? So this kind of a situation is known as partition. So here A1, A2 and so on up to AN is a partition, correct? Then what is the formula if you want to find out the number of element of S? This is the modulus, means number of element of S. That will be is equal to A1 plus A2 number of elements plus so on number of elements of AN, correct? This is the sum principle. In other way, you can take this as very simple way कि अगर आप पास we have some events now, instead of A1 A2 A2 A up to AN we are taking events. Okay, so this is the first case that we have discussed here. The second case, same sum principle में we have a E1 events, we have a E2 events and so on up to EN events. Means अगर E1 event जो है happen in E1 small E1 ways, okay, और E2 जो इवेंट है वो E2 वेज में पॉसिबल है, उसकी पॉसिबिलिटी तो EN की EN में है. सो देन either the happening of then number of ways in which, जरा लाइन की सेंस को समझना, in which either, ये चीज समझना, either E1 can happen or E2, ये ध्यान रखना, or E2 can happen or so on up to EN and happen will be is equal to, because this is or E1 plus E2 plus so on up to EN, correct? So this is the sum rule. तो ये काम चॉइस में भी लग सकते हैं, ये हम यही कॉन्सेप्ट जो है चॉइस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें चूज़ करनी हो कोई एक ऑब्जेक्ट E1 वेज में, दूसरी ऑब्जेक्ट E2 वेज में चूज़ करनी हो, तीसरी ऑब्जेक्ट EN वे में चूज़ करनी हो एंड सो ऑन, है ना.
So total number of choice this or this will be is equal to this. ये ऐसे भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर करते हैं। सो इन हाउ मैनी, देखिए, सो सी दिस एग्जांपल, इन हाउ मैनी वेज वी कैन ड्रा ए हार्ट, or try to understand or correct. So this is very simple. How many hearts are there? 13 hearts. So number of ways a heart can draw is 13, or plus speed can draw 13, speed is also 13. So this will be the answer for the first. So in numbered card means how many numbered card? So you must know the numbered card. We have 12 face card means 4 queen, 4 king, 4 queen, 4 jack and 4 ace. Ace is also not numbered card. So 16 cards are other than numbered, means if you will subtract 52, 16 out of 52 you will get 36. So you have a 36 numbered card. Keep this thing in your mind. In future, maybe same kind of a situation, examiner ask another question. 36. How many kings? 4. Or is there, means they are not occurring simultaneously, they are occurring separately. That's why we are using this principle. So answer is 40. Now a spade is 13 and an ace 4, so 17 is the answer, correct. So now move to the second principle, that is a product rule. What is the product rule? Product rule says that if you have a S1, S2 and so on Sn are finite sets, then you know that, students, you know that S1 cross S2, this is ordered pair, cross has 3 ordered pair of 3 sets, and so on Sn will be is equal to number of elements of, and you want to find out the number of elements on this, that will be number of element of S1 multiply number of element of S2 and so on number of element of Sn. You must keep in your mind. In the same way, if you have a E1 event occur in E1 ways, E2 event occur in E2 ways, and so on, En event occur in En ways, then ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, then sequence of events E1 followed by, ये बड़ा ध्यान रखना है, ये सेपरेटली अकर नहीं हो रहे, एक के बाद एक, followed by E2 and so on followed by En can happen in E1 into E2 and so on up to En. Product rule, very simple. Same thing you can apply in the choice. अगर E1 event you will choose E1 object, one object in E1 ways, another object in E2 ways, another and so on up to En ways. So then the occurring of choice of E1 event followed by E2 event followed by and so on up to En event will be the product of this one. So how we can use this, I will discuss the examples, things will be more clear. So see this question, very useful. If the license plate of a state required 3 English letters and followed by 4 digits, how many plates you can generate? 3 conditions are given. Repetition of letters and digits are allowed.
Letters are allowed to repeat but not digits. No repetition allowed in both the case. So solution, first one. You know that the principle say that means after जब आपके पास तीन letters हैं 1 2 3 and 4 digits followed by 1 2 3 3 4 यहाँ पे letters हैं here you have a यहाँ से यहाँ तक और here to here have digits and case number 1 it is very much clear because एक letter के बाद followed by दूसरा letter है then तीसरा letter है फिर digit है so then it is the product rule that is very much clear. अब पहली जगह पे how many English alphabets are there 26 so you can put here 26 multiply here also because repetition is allowed so 26 into 26 here how many digits are there 10 into 10 into 10 into 10 into 10 so when you will calculate this is very large value you can do at your end means the final answer you can write 26 raised to power 3 into 10 raised to power 4 this will be the final answer. Case number 2 we are saying that letters are repeated means then there will be 26 into 26 into 26 repeated but digits cannot be repeat means first case में तो 10 आएंगे जो digit यहाँ पे आएगी यहाँ नहीं आ सकती you will reduce 1 9 then जो यहाँ पे आ गया then 8 then 7 so the final answer will be 26 raised to power 3 into 10 into 9 into 8 into 7 whatever the value you will get after calculating it that will be the answer. So let's move to the third case. Third case no repetition is allowed so 26 can be put in the first place here will be 25 because if letter comes here it cannot comes here so then 26 4 into 10 into 9 into 7 8 into 7 so this will be the after calculating this you will get required answer. Okay, important. See this question. How many license plates are there that involves 1 2 or 3 letters followed by 4 digits or 1 2 3 letters followed by 1 2 3 4 digits. So what is the meaning of that? Let's discuss solution of first one. Correct. So see number plug no because here they are saying 1 letter 2 letter or 3 letter we will take all the cases means number of plates having 1 letter and 4 digits digits will be 4 in first case will be is equal to so if there is only one letter so how many letters you can put 26 and how many digits are 10 and they are not saying digit cannot be repeated digit can be repeated means 10 raised to power 4 letters this will be the case 1 now the number of plates having 2 letters and 4 digits will be 26 raised to power 2 into 10 raised to power 4 now number of plates having 3 letters and 4 digits will be 26 raised to power 3 into 10 raised to power 4 so this will be the case number 1 so because either this is happen or this is happen or this is happen then by some principle so total number of plates will be is equal to 26 into 10 raised to power 4 plus 26 raised to power 2 into 10 raised plus this or this 10 raised to power 4 plus 26 raised to power 3 into 10 raised to power 4
So further you can take 10 raised to power 4 common, 26 plus 26 square plus 26 cube. So you can see how much calculation is required. This is very large. You can leave the answer here, but this will be the answer of this. Second case, what we have in the second case, 1, 2, 3 letters by 1, 2, 3, 4 digit followed by. So then the number of, very interesting, अगर हमारे पास एक लेटर हो, दो लेटर हो, जहाँ तीन लेटर हो, so what you can write, the number of plates in which 1 or 2 or 3 letters, इकट्ठा रख लेते हैं. अगर 1 आएगा तो 26, 2 आएगा 26 स्क्वायर, 3 आएगा 26 क्यूब. करेक्ट, ये हो गया हमारा लेटर्स का. नाउ द नंबर ऑफ प्लेट्स in which there are 1 or 2 or 3 or 4 digits, because here is also option. 1 digit means 10, or 2 digit means 10 raised to power 2, or 3 digit means 10 raised to power 3, or 4 digit means 10 raised to power 4. Now letters are followed by digits, so therefore total number of plates will be is equal to letters followed by product rule followed by plates, so digits, either 1 or 2 or 3 or 4. After calculating you can get answer, so this will be the required result. Now there is another technique where we use the indirect counting. What is the meaning of that? Means if you have a set is a subset of S. S is a total sample space, and one thing is very clear, that complement of A, complement of C will be S minus A. You are very much clear. Okay, means you will take all the elements of A from S, you will get A complement. So if you want to find out the number of element of A, you can find the number of element of S minus number of element of A complement. Means you can take this thing here or this thing here, it is up to you. This relation will be always there. So where we are using, I will discuss one example here. Now things will be more clear to you after having discussion on this example. See, student, what they are saying, in how many ways that 10 people are seated in a row so that a certain pair of person, कोई खास दो लोग हैं वो इकट्ठे नहीं बिठाने. जैसे बोल देते हैं ना क्लास में सम टाइम टीचर, आप दोनों ने कभी इकट्ठे नहीं बैठना, ये दो स्टूडेंट इकट्ठे नहीं बैठेंगे, बाकी जहाँ मर्जी जो मर्जी हो बैठे जाए. तो you can find all the arrangement, but these two per student or person cannot sit together. So how you can find the number of arrangements? So in how many ways the 10 people can sit in a row so that the certain pair of person cannot sit together? So what you will do, सबसे पहले आप निकालोगे total number of ways, ठीक है, without taking any condition. Number of ways means when there is no condition, there is no any condition, then it can be arranged. It can be arranged. It can be arranged in how many ways? 10 factorial.
in 10 factorial ways, because 10 person है at a time 10 ही लेने हैं, तो that will be 10 factorial, you know that, correct? But अब हम क्या करते हैं कि अगर 2 person together ले लें out of that, so now the number of ways when, जो हम निकालना चाहते हैं वो नहीं निकाल रहे, हम उसका रिवर्स निकाल रहे हैं. इन द नंबर ऑफ वेज, मतलब हमें ए निकालना है पर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं. सो नंबर ऑफ वेज इन विच 2 person टुगेदर, करेक्ट, दैट विल बी इज इक्वल टू, आप अगर 2 person को आप सिंगल मान लोगे तो बाकी कितने रह जाएंगे, क्योंकि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर इनको एक मान लोगे तो बाकी बच जाते हैं हमारे पास 8, और 8 ये और एक ये 9, टोटल 9 फैक्टोरियल, उनको रिपीट कर दोगे 9 फैक्टोरियल. और ये आपस में तो 1 और 8 ये आपस में रिवर्स हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ, ये इधर जा सकते हैं ये इधर जा सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वो टेकिंग 2. तो 2 वेज ये हो गए, तो मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी द फाइनल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 person टुगेदर. सो नाउ मीन्स number of ways in which not 2 person not together, मतलब इसका रिवर्स, तो दैट यू नो दैट 10 फैक्टोरियल से वी विल सब्ट्रैक्ट 2 9 फैक्टोरियल, टोटल में से ये माइनस कर देंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, करेक्ट. नाउ मल्टीसेट, a collection of, very simple to understand, because when you talk about a set is a collection of well defined objects and you are not repeating any object, you know that you are not repeating any object. If objects are allowed to repeat in a set, then set is known as a multiset, correct. I will define it, a collection of objects in which objects are allowed to be repeated is called multiset. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल जैसे ए 3 बार आ गया, जैसे किसी वर्ड के अंदर कोई लेटर रिपीट कर जाता है, सेम थिंग इज देयर, बी एंड सी. तो जैसे ये 3 times ए रिपीट हुआ है और 2 times बी रिपीट हुआ, 1 time सी रिपीट हुआ है. तो इन जर्नल वी विल राइट इन जर्नल यू कैन राइट R1 times A1 रिपीट हुआ है, R2 times A2 रिपीट हुआ है, एंड सो ऑन RK times AK रिपीट हुआ है, करेक्ट. तो आपको पता है कि जब हम नंबर ऑफ परमुटेशन निकालते हैं इस सिचुएशन के अंदर, सो द नंबर ऑफ परमुटेशन, जब भी हम निकालते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन, n परमुटेशन निकालते हैं, निकालते हैं, तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास यही सिचुएशन हो, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे n फैक्टोरियल, जितने टोटल अगर मान लीजिए s के नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s n है, तो अब उसमें A1 कितने टाइम रिपीट हुआ, R1, तो R1 फैक्टोरियल से R1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, A2 रिपीट हुआ है R2 से, एंड सो ऑन अप टू RK से. ये आपको पता, वी हैव डन दिस अर्लियर आल्सो, सो यू मस्ट नो दैट दिस फार्मूला is known as the n permutation, correct. तो